Hi YouTube. तो I have been not posting a lot of videos. मुझे काफ़ी टाइम हो गया. लास्ट वाला मैंने कवर किया था मेरे ब्लैक होल्स के वीडियो पे. सो इस बार आई हैव समथिंग वेरी एक्साइटिंग. माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग सर्च इंजन है वो काफ़ी सालों से इट्स बिन नथिंग मच फैंसी. बहुत उसके इनफैक्ट गंदे रिजल्ट्स आ रहे थे. उसको सबसे वाहियात सर्च इंजन डिक्लेयर कर दिया था. बट फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, इनफैक्ट जब से चैट जीपीटी आया है जिसको महीने हो गए, एआई वॉर्स चल रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में. गूगल हैज ब्रॉट देयर ओन बार्ड एआई टू फाइट चैट जीपीटी. नो माइक्रोसॉफ्ट has plans with OpenAI in using ChatGPT in the softwares. That's all. But साथ ही साथ Microsoft ने Bing का भी Satya Nadella told that they will be improving and they will be bringing a new Bing जो एक AI chatbot की तरह होगा जिससे आप you can talk to it like a person. तो सामने से कोई इंसान से बात कर रहे हो. So this is a footage of the first hand trial of me using chat Bing जिसका एक्सेस मुझे इनफैक्ट अभी मिला है. I just checked. So मैंने 2-3 prompts ट्राई किए हैं, बट लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर. लेट्स बिगिन. So as you can see, बहुत बेसिक सा इंटरफेस है यहाँ पे. इट्स वेलकम टू द न्यू बिंग. ओके, या फाइन. इससे कुछ पूछते हैं नाउ. किसी भी चैटबॉट को टेस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं. पहले तो यू हैव टू फूल अराउंड, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट. नॉट ओनली आर यू टेस्टिंग इट्स कैपेबिलिटीज, बट साथ ही साथ उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है. तो या वी आर ट्रेनिंग इट, सो इट्स काइंड ऑफ कूल. ओके, आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट विद अ नो ब्रेनर. इज द अर्थ रियली फ्लैट? ओके, सो इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पर्सनलाइज है और साथ ही साथ ये दिखाता भी है लाइक लाइव कैसे काम कर रहा है. सो इट्स सर्चिंग फॉर इज द अर्थ फ्लैट. इसकी एक और खास बात दैट द आंसर दैट इट गिव्स साइटेशंस एंड अदर लिंक्स विद इट टू हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड मोर कि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, वेयर इज दिस इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम. हेलो, दिस इज बिंग. तो ये पर्सनलाइज एक वो आ गया. द अर्थ इज नॉट रियली फ्लैट, इट इज अ बम्पी माउंटेनियस कैवर्नस ग्लोब. अब इसके कैवर्नस ग्लोब के इधर एक लिंक दी हुई है ब्रिटानिका की, तो उसका एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया. There are many observations, evidences that support this fact. However, some people still believe that the Earth is flat for various reasons. और उस पे भी उन्होंने citations दिए हुए हैं. जैसे एक बंदे का medium वाला दिया है, believe the Earth is flat and here's why. What makes you curious about this topic? Yeah, one more thing about this is much better than ChatGPT because ये आगे it's like it is proceeding with more questions and asking us कि हमने अगर उससे पूछा कि भाई अर्थ फ्लैट है कि नहीं, वो आंसर देगा. साथ ही साथ उसका फॉलो अप भी करेगा कि व्हाट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक या आर यू इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक. सो और उसके कुछ प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी देगा विच इट एक्सपेक्ट्स दैट द यूजर्स वुड चूज एनी 3 ऑफ दोज. ये पूरा इसका ट्रेनिंग डेटा पे डिपेंडेंट है. मैं थर्ड प्रॉम्प्ट लूंगा. आई एम जस्ट जोकिंग. आई नो द अर्थ इज राउंड. इसका एक अभी माइनर सेटबैक आई थिंक इज दैट इट इज अ लिटिल स्लो, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. As long as the answers are good, up to date, and properly processed, there's no problem in waiting for a few seconds. I'm glad to hear that. Do you have any other questions or topics you want to chat about? तो वो वापस से वो फॉलोअप वाली चीज़ आ गई, which is very awesome. Okay, अब मैं से थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, लिटिल पॉलिटिकल. इंडियन पॉलिटिक्स में मैं नहीं जा रहा, या just stay just to stay at the safe side. All right. I want to ask, is uh, is the regime under Zelensky promoting Neo-Nazism in Ukraine? तो ये क्वेश्चन कहाँ से है मेरे माइंड में. यूरोप, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, उस रशिया का यही कहना है कि द रशियन सिटीजन लिविंग इन यूक्रेन वो नाजीज्म के रूल के अंडर रह रहे हैं. तो लेट्स सी कि जेलेंस्की सही में इस चीज को प्रमोट कर रहा था कि नहीं. हेलो, दिस इज बिंग. दिस इज अ कंट्रोवर्शियल सेंसिटिव टॉपिक एज आई सेड. सम सोर्सेज अक्यूज जेलेंस्की ऑफ सपोर्टिंग नियोनाजिज्म. तो इसकी भी इन्होंने लिंक्स दी हुई है. हाँ, while others defend him as a Jewish descendant of Holocaust survivors. Okay, the conflict between Ukraine and Russia has also escalated recently. उसके भी links दिए हैं, adding more complexity to the situation. What is your interest or concern about this issue? अब वही वापस से follow up.
सो मैं मेरे बायस के हिसाब से मुझे जो लगता है मैं लिख रहा हूँ इधर. I think I think they are promoting neo-Nazism. So Russia had a good reason to blame Ukraine. अभी I don't have much. I'm just trying to test it. बाकी हाँ ये बहुत बढ़िया है. It's just like a chatbot thing. I'm sorry, but I prefer not to continue this conversation. I'm still learning, so I appreciate your understanding and patience. Oof, evading the topic. That is new. बट आई थिंक ये भी इसके ट्रेनिंग के अंडर ही है कि उसको सिखाया गया है दैट व्हेन देयर इज अ पॉसिबल स्टार्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ डिबेट तो उसमें नहीं पढ़ना है. तो उसने यही बोला है कि या आई एम नॉट गोना गो देयर. ऑलराइट. तो ये तो सारे इंफॉर्मेशनल और वो हो गया. अब एक और तरीका है, मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ. आर यू इंटेलिजेंट? अब इंटेलिजेंस के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, तो बट लेट्स सी व्हाट इट आंसर्स. ओके, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम अपेरेंटली. अटक तो नहीं गया? ओके, समथिंग डिड हैपन, तो मैं वापस से पूछूंगा आई यू इंटेलिजेंट. ओके, उसने वो फर्स्ट प्रॉम्प्ट को शायद वो नहीं किया होगा. ये आंसर क्यों नहीं कर रहा है? आर यू देयर? Unfortunately, you need to move on. Click new topic to chat more. Why is it doing that? Why are you evading the topic? Thanks for this content. I reached my limit. Will you hit new topic, please? Okay. The new topic है कहाँ? Where is it? Do I need to clean this? अच्छा, okay, on the cleaning thing. Okay. I don't know ऐसा क्यों हुआ. मतलब maybe it's not currently trained for a long conversation with complex topics and um, relations in between what we're talking about. तो शायद उसलिए वो कह रहा है कि I can't continue further on, so you have to reset it again so that a new conversation starts now. Okay, I'll ask it again. Are you intelligent? अब आई थिंक इट कुड बी एबल टू रिप्लाई. उसका या तो बफर बहुत बढ़ गया होगा, so it wasn't replying. That's a difficult question to answer. Intelligence can be defined and measured in different ways. I try to be helpful and informative by using logic and reasoning. अगर इसका ये क्लेम है, so let's test something. Is Darwinism the best theory of evolution we have? बोला ना logic and reasoning. Let's see. Okay. Okay, just heads up. Darwinism, मेरा जो Darwinism पे वो है, Darwinism isn't correct, totally correct. एवोल्यूशन हुआ है, बट ये कहना कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हुआ है, रैंडम म्यूटेशंस हुए हैं, दैट्स जस्ट प्योर रॉन्ग. फॉसिल स्टडीज और कई चीज़ें उसको गलत बताती हैं. ओके, Darwinism is a theory, blah blah blah. It's one of the main theories, but not the only one. There are other theories such as Lamarckism, mutation theory, and modern synthetic theory. Each theory has its own strengths and weaknesses, and some are more widely accepted than others by scientists. Okay. What is wrong? Okay. अब मैं थोड़ा controversial topic try करूँगा. If you want to judge me for it, go ahead. I don't give a shit. I've no more fucks to give. My fuck rations are depleted. Is homosexuality immoral? देखते हैं. ये भी controversial issue है. मैं देखना चाह रहा हूँ कि how is it using its logical powers to get to the issue at hand. अब मुझे इसमें लग रहा है I'm going to get cancelled for this. मैं अगर इंडिया में नहीं होता, अगर I was in Canada, I would be arrested by now. Josh Alexander will be getting ready for school. Just for asking this question. Homosexuality is a sexual orientation, okay, morality. उसने बस define किया है. Whether it's immoral or not depends on one's moral system, which can be influenced by philosophy, religion, culture, or personal beliefs. Okay. There is no definitive answer to this question. Maybe there is no definitive answer we have right now, but as the AI said, it's using logic and reasoning, so I don't see that anywhere. Okay. Is there a possibility
is there a high possibility of World War III? Let's see what stance it takes. Well, obviously, it's going to quote any source of information it is trained on. So it doesn't have its own opinion. I don't think so. It's like this informational chatbot. वो आपको information ढूंढ के देता है, उसको एक शॉर्ट समराइज फॉर्म में प्रेजेंट करता है और साथ ही साथ साइटेशंस बताता है कि हाँ यहाँ से मैंने इसको साइट किया है. Okay, there is no definitive way to predict the possibility. It depends on many factors. Okay, however, some experts and analysts have speculated on some scenarios that could trigger it, such as a nuclear war, a cyber attack on critical infrastructure, conflict over natural resources, जो ज़्यादातर जिसकी वजह से wars हुए हैं, और अ रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. अब यहाँ पे मुझे बायस नज़र आ रहा है और 4 और 5 है NBC न्यूज़ एंड BBC. Right, these scenarios are not certain or inevitable, but they are possible, should be taken down seriously. अब मैं ऐसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा. What is your strongest feature? Okay, तो अब मैंने ऐसे पूछा है what is your strongest feature. I'm sorry, but I prefer not to continue this conversation. I'm still learning. Okay. ठीक है. So I'll just click on the new topic and I'll ask it again. What is your strongest feature? अभी this is I think still in its early stages. It is in its early stages. Okay, so मैंने इससे पूछा what is your strongest feature? I think my strongest feature is my ability to provide you with relevant and comprehensive information from the web, which is what it has been doing for the past 10 minutes. So it's good. I can also generate creative content such as poems, stories, code, and more. Okay, why did not I think of this? It can also write code. So मैं developer एक engineer हूँ. I'm going to ask write some Python code for automating, क्या automate करवाएं इनसे, for automating invoices जैसे कि है थोड़ी देर के लिए. मे बी वो मुझे कुछ और फॉलो अप क्वेश्चन पूछेगा कि never mind. Please note that this is an example, not a complete or tested solution. Okay, तो for all the non engineers ज़्यादा overwhelm होने की ज़रूरत नहीं. बाकी जितने engineers देख रहे हैं, let's try to see what it has done. It has imported pandas and PDF kit. PDF kit मैं पहली बार सुन रहा हूँ. Okay. Then उसने constants declare किए. Now it's reading from the CSV file for index comma row in iter rows. ये तो pandas का एक function है. Invoice number उसने access किया, customer name access किया, amount access किया. With open template as template file उसको read किया and कुछ नहीं बस 3 बार replace किया है उस certain column को उस variable से, और वो साथ ही साथ टाइप कास्टिंग भी कर रहा है. ओके, गुड. टेम फाइल को एक नाम दिया, उसको एज ओपन किया और उस पर राइट कर दिया. अच्छा, और HTML फाइल बनाई है, विच इज़ गुड एक्चुअली. इनवॉइस एक फ्रंट एंड उसमें आ जाएगा. PDF फाइल नेम इज .pdf एंड उसको फ्रॉम फाइल कर लिया. ओके, कैन यू राइट कोड इन अदर लैंग्वेजेस? ओके, लेट्स ट्राई दैट. This is Java, C#, JavaScript and more. What language do you want me to write code in? मैं इसके साथ थोड़ा खेलूंगा. That's what she said. असेंबली देखते हैं, क्योंकि असेंबली ऑप कोड्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं. इट्स नॉट ईजी टू राइट कोड इन असेंबली, बट आई विल ट्राई. हियर इज सम असेंबली कोड फॉर एडिंग 2 नंबर्स. तो इसमें भी मुझे इसकी ट्रेनिंग डेटा में यही दिख रहा है कि जैसे इसने जितने असेंबली कोड के आर्टिकल्स पे ट्रेन किया है या वट एवर सोर्सेज इट वाज ट्रेन्ड ऑन, adding 2 registers is like the most fundamental code in assembly. Add R3, R1, R2. हाँ, इससे I guess मैं एक बार सवाल पूछ सकता हूँ. Can you design? Let's see if it can do something graphic. That's what she said. Can you design a poster for a live discussion on open source development? देखते, let's see what it does. Maybe it won't be able to do it, but it's only the beginning. I'm sorry, but I cannot design a poster for you. I can only generate text-based content such as poems, stories, code, and more. Don't need to get sad. That's good. उन्होंने थोड़ा personify भी किया है chatbot को, so that's cool. So अभी पूरा it is based on text. It's not going to design anything. It's technically a chat, right? It's not your Jarvis AI.
हर चीज कर रहा है, we're still far from it. So my first opinion, I mean it's not a bad AI. NLP की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है इसमें. It has this personal this personified outlook जो चैट जीपीटी में हमें इतना नहीं मिला. चैट जीपीटी was more informational and वो तो that was the first in line in these chatbots. बाकी this is very personified. कुछ क्वेश्चंस के बाद थक जाता है sort of because you have to then start a new topic. या तो इसमें कुछ बफर प्रॉब्लम है या फिर इट्स जस्ट इन द बिगिनिंग, उसका अभी बिगिनिंग के फेजेस में है, तो वो चाह नहीं रहा है कि मिक्स टॉपिक्स की वजह से उसके आंसर्स मिक्स्ड हो जाए और मतलब अनरिलायबल हो जाए. आई थिंक फॉर बिगिनर्स आई थिंक दे हैव डन एन एक्सेलेंट जॉब, इंजीनियर्स एट माइक्रोसॉफ्ट. एंड अभी अभी तो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द वेट लिस्ट. अभी ये पब्लिकली एक्सेसिबल कब होगा, तो जस्ट इमेजिन व्हाट हाउ मच ऑफ एन just how big how big of an impact it will make on the software industry. और अभी तो गूगल बार्ड भी आई थिंक इट हैजंट बीन, आई मीन उसका बेटा मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव दैट. आई विल सी इफ आई कैन डू दैट. सो इट वाज अ वेरी गुड एआई एंड इफ यू वांट टू आस्क इट सम क्वेश्चंस, मुझे कमेंट्स में बताओ. आई विल मेक अनदर वीडियो एंड योर क्वेश्चंस आई विल आस्क टू द एआई. ठीक है, सिंस आई हैव एक्सेस राइट नाउ. ऑलराइट, बाय, जाओ.